archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. नमस्कार। DD1, DD2 और DD3 के दर्शकों का हम राष्ट्रपति भवन के इस भव्य अशोक हॉल से स्वागत करते हैं। यहाँ आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री श्री HD देवेगौड़ा के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। नए मंत्रियों को माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। Greetings from the august Ashok Hall, where in a short while from now, new members of Mr. Devegowda's cabinet will take oath. This is the fourth swearing-in ceremony after the recent elections. During the first swearing-in, the BJP leader, Mr. Atal Bihari Vajpayee, was sworn in as Prime Minister along with his cabinet colleagues. Then Mr. HD Devegowda took oath as Prime Minister along with his cabinet colleagues. On the 28th of June, the first expansion of the government took place, and today some new ministers of the United Front cabinet will be sworn in by the President, His Excellency Dr. Shankar Dayal Sharma. The First Lady, Mrs. Bimla Sharma, being greeted as she takes her seat. And in the background we see the arrival of the Vice President of India, Shri K.R. Narayanan and Mrs. Narayanan. Mr. Narayanan being greeted by the Prime Minister. The former Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and the Speaker, Shri P.A. Sangma. The Ashok Hall, which gives the feeling of a large jewel box, is a rectangle measuring 32 meters by 20 meters. The fanfare announces the arrival of the President. Sir, may the ceremony commence. Cabinet Minister, Shri R.L. Jalappa. I,
I, R.L. Jalappa, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, R.L. Jalappa, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. Ministers of State, Shri Raghubans Prasad Singh. मैं रघुवंश प्रसाद सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रघुवंश प्रसाद सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सतपाल जी महाराज। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थिरु NVN सोमू। I, NVN Somu, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, NVN Somu, do solemnly affirm
that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. Thiru T.R. Balu. I, T.R. Balu, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for Union, that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, T.R. Balu, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my constitution or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. So may the ceremony conclude.